Fourth is you can see the definition of details of preeclampsia in this slide also. See, we'll check once the definition. The preeclampsia is a multi-system disorder that I already told you in the previous definition also. Preeclampsia is a multi-system disorder of unknown etiology characterized by the development of hypertension to the extent of 11490 mmHg or more with the proteinuria induced by the pregnancy after the 20 weeks of pregnancy in a previous no normotensive and non proteinuric woman found. It is given by this International Society of Hypertension. This is the only definition, is perfect one which you will follow while having the preeclampsia. Okay, so go with this definition. Next, we'll see the risk factors. See, these are the risk factors which exaggerate, which initiate the preeclampsia. Let's see one by one, everyone. Primary gravida. It uh, more commonly in the primary gravida women. मल्टी ग्रेविडा वुमेंस में बहुत कम दिखता है. दिस इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द प्राइमरी ग्रेविड वुमेन. फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्शिया अगर किसी को प्रीवियसली अगर है तो वो डेफिनेटली होगा. बट द प्री एक्लेम्शिया ऐसा डिजीज़ है जो अगर पहले किसी को नहीं हुआ है तो भी उसको हो सकता है. ठीक है. प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज, हाइपोप्लेसेंटोसिस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, डायबिटीज, दिस ऑल आर द डिजीजेस विच इनिशिएट द preeclampsia. Placental ischemia, molar pregnancy, poor placental decreased trophoblastic invasion. So these are the risk factor: genetic disorder, immunologic phenomena, new paternity, pre-existing vascular or renal disease, thrombophilia. These are the risk factors which initiate the preeclampsia. Okay, now this is the classification of preeclampsia. First and second is divided in the primary and secondary. Secondary is 30% found, and primary is it is 70% found. Okay, now we'll see the clinical type, that is divided in the mild and severe. Okay, so what is mild, what is severe? See one by one. This include cases of sustained rise of blood pressure of more than 140 more than 140 90 mmHg without significant proteinuria. This is called mild preeclampsia, जिसमें क्या हुआ है, केवल 140/90 ब्लड प्रेशर हुआ है विदाउट एनी प्रोटीनयूरिया. प्रोटीनयूरिया अभी नहीं मिला है. एंड दिस टू आर दी very common sign symptoms of pregnancy induced hypertension, or you can say the preeclampsia. Which one? पहला हाइपरटेंशन, बीपी लेवल है, ब्लड प्रेशर लेवल है, वो बहुत हाई रहेगा. एंड सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन्यूरा. प्रोटीन यू विल फाउंड इन द यूरिन इज द सेकेंड साइन एंड सिम्टम्स which mother will have during the preeclampsia. Okay, but this mild condition is absence of proteinuria. Okay, and in the severe case we'll see persistent systolic blood pressure of 160 mmHg, or diastolic pressure is 110. It means 160/110 is the condition of, or is the BP of severe patient. सीवियर पेशेंट का बीपी इतना रहेगा, हाइपरटेंशन इतना बढ़ा रहेगा. ओके, सो दीज वर द क्लिनिकल टाइप्स ऑफ preeclampsia, and these are the sign and symptoms which mother will feel while having the preeclampsia. First is hypertension extent of 140/90 and 140/90 mmHg. 140/90 से भी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं और होते भी हैं. ठीक है. Headache over the occipital or frontal region. This is the important one which mother will have. Disturbed sleep, diminished urinary output which would be less than the 500 ml हो जाएगा in 24 hours. अब you just imagine 500 ml क्या होता है, 24 घंटे में केवल 500 ml यूरिन आउटपुट हो रहा है. तो दिस इज सीरियस कंडीशन, राइट. See, you can see the images. Epigastric pain associated with vomiting at time of coffee, silode due to the hemorrhagic gastritis, or
Subcapular hemorrhage in the liver, blurring. These are the symptoms what mother will have. Most important symptom is blurred vision. हमने अपने टाइम की बुक में, दत्ता की बुक में ब्लड विजन पढ़ा है. ब्लरिंग और डिमिनिशेस द विजन. या तो विजन कम हो जाएगा और या तो ब्लर दिखेगा. ठीक है. और या तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो जाता है इन सम ऑफ द केसेस. ए रैपिड गेन इन वेट ऑफ मोर देन 2.5 kg ए मंथ और मोर देन 500 ग्राम ए वीक इन द लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. ये वेट इंक्रीज होने के चांस होते हैं. Visible edema, this is also one of the symptoms. Visible edema over the ankles or rising from the bed in the morning. जैसे ही बेड से सो के उठो तो उस टाइम पे ज़्यादा लगता है. स्कैंटी राइकर और ग्रोइंग रिटार्डेशन ऑफ द फीटस. Proteinuria, these all are the, see this is the edema of the leg what mother will feel during the pregnancy. Okay, so these are the preeclampsia, and we went about the sign and symptoms, what mother will how mother will diagnose. And now we'll see the effect on fetus and effect on mother. अब किसी वुमेन को प्री एक्लेम्शिया हो गया है, ठीक है, अब उसको क्या क्या अंतर दिखेगा, दिस इज डिफरेंट वन. ओके, so on next slide we'll see the effect on fetus.